Thank you, Madam. Madam, let me initiate my intervention by saying that without having any qualm, not even an iota of scruple, I am opposing the budget documents, which is nothing but a piece of vapid rigmarole, because the budget itself is an eloquent testimony of the attitude of this government, which is simply anti-farmer, anti-people, anti-labor, anti-SC, anti-ST, anti-minority, and all. See, that is why my first charge against this government is that the budget is nothing but a skewed numbers, neglecting Ladakh, Jammu and Kashmir, northeastern region. It's a dubious green policy, failing to address economically vulnerable people of our country, including women, SC, ST, minority. Agriculture sector has been totally ignored, and the health sector has been neglected. I would like to refer our leaders, Madam Sonia Gandhi's comment on this budget, that the budget is a silent strike on the poor with a deadly combination of insufficient funding and rising inflation. I quote Madam Sonia Gandhi in his article. In her article she has written, I quote, that the Prime Minister's policy to benefit his few rich friends at the expense of poor and middle-class Indians has led to continuous disasters, from demonetization to a badly designed GST, hurting small businesses, to the failed attempt to bring about the 3 farm laws and the subsequent neglect of agriculture. Destructive privatization has handed over priceless national assets to selected private hands cheaply, leading to unemployment, especially for the SC, STs. Even the hard-earned savings of crores of poor and middle-class Indians are threatened as the government forces trusted public institutions like the LIC and SBI to invest in poorly managed companies owned by its chosen friend. Chairman, Madam Chairperson, first of all, I would like to draw the attention of this House that in our country, earlier also I stated that Muslim population shares nearly 15% of our population in India shares by the Muslim people. But the budget, in this budget, scheduled caste, scheduled tribe, along with Muslim population, have been brutally discriminated against. For your convenience, I would like to refer some budget documents for your convenience only. First of all, this government always espouses सबका साथ सबका विश्वास, बाद में लगाते हैं सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। मैं इसके साथ लगाना चाहते हैं सबका साथ सबका विकास, सबका प्रयास और हमारे अच्छे दिन चले गए वनवास। मोदी जी हमें वादा किया था कि ले जाएंगे बनारस, लेकिन हमारा हाथ में थमा दिया एक खट्टी सी अनारस। अब देखते जाओ बजट के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है। ये माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री में एलोकेशन को घटाया गया। Allocation to the Ministry of Minority Affairs were reduced by 38% from rupees 5020.50 crore for B 2022-23 to rupees 3097.60 crores. The revised estimates for financial year 2023 show that only rupees 2612.66 crores earmarked for minorities. But now I am talking about minorities' pathetic situation in country because of your benevolence.
Minority groups have expressed concern over the budget slash, as many view it as another in a series of Islamophobic policy decisions that victimize already marginalized communities. मैडम, हमारे हिंदुस्तान में मुसलमानों के खिलाफ बहुत कुछ हो रहे हैं, सब जानते हैं। मैं जिस प्रदेश से आते हैं, उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा मुसलमान हमारा स्टेट बंगाल में रहते हैं, और हमारे डिस्ट्रिक्ट जो मुर्शिदाबाद है, मुर्शिदाबाद में एब्सोल्यूट टर्म में सारे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा मुसलमान रहते हैं। परसेंटेज वाइज अनंतनाग में, उसके बाद मुर्शिदाबाद में। तो हम जानते हैं इन लोग की बुरी हालत, हम जानते हैं, भली भांति जानते हैं इन लोग की बुरी हालत को। और ये मजबूरी के चलते कभी घर बार गांव छोड़ के दूसरे राज्यों में चले जाते, और नहीं तो दूसरे देश में चले जाते। तो इसलिए जब इन लोगों के लिए कुछ ठोस कदम उठाना चाहिए, ये सरकार इन लोगों के साथ पता नहीं क्यों ऐसा विरोध करते हैं। शायद इन लोगों को पता नहीं हिंदुस्तान के इतिहास में मुसलमान लोगों की योगदान क्या है, शायद इन लोगों का पता नहीं है। अगर होते तो ऐसा नहीं करते। अगर फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से लेके हमारे हिंदुस्तान की आजादी तक अगर देखा जाए, तो सारे दशकों से 1857 से शुरू करके हजरत महल, नवाब सिराजुद्दौला से लेकर अशफाकुल्ला, और आजादी के बाद मौलाना अबुल कलाम आजाद, सबको देखो आप खान अब्दुल गफ्फार खान को देखो। आप हजरत महल के इतिहास जानते हैं कि चिन्हाट जंग में ब्रिटिश को पराजित किए थी। ये सारे इतिहास को तोड़ मोड़ करके, विरूपण करके आप इस तरीके के नजारा पेश करते हैं कि लोगों की मन में एक अद्भुत किस्म के नफरत पैदा होते हैं। मैं सिर्फ इन लोगों को समझाने के लिए कहना चाहते हैं, ऐसे किसी मिसाल जमाने ने पाई हो जहां हिंदू की घर में आग खुदा ने लगाई हो, जहां मुसलमान की बस्ती की यारो राम ने जलाई हो, और गुरु नानक ने सिर्फ सिखों को राह दिखाई हो। ऐसा नहीं देखा आपने? राम कहिए, रहीम कहिए, गुरु नानक कहिए, यीशु कहिए, सब नरम है। चमचों को देखो, पतली से गरम है। ये नफरत की असर देखो क्या क्या होते हैं। गाय हिंदू बन गए और बकरा मुसलमान हो गई है। तो मैं इस जगह से आप लोगों को हटाने की कोशिश करते हैं, इसीलिए कि अगर देश की तरक्की की बात आप लोग करते हैं, तो ये थोड़ा समझना चाहिए कि हम सबके साथ ले जाना चाहिए। उस समय आप माइनॉरिटीज के खिलाफ आप जो कर रहे हैं, आपकी राजनीति में और आर्थिक क्षेत्र में भी ये बड़ी दुखनीय बात है। A scheme for the education for minorities has been reduced significantly, indicating continued attack on minority rights and systematic discrimination. Only half of the total budget estimate for financial year 2003-04 has been earmarked for education empowerment. I know our finance minister, Madam Nirmala Sitharaman, is quite competent, but I will suggest her that she should be a good communicator. The allocation for skill development and livelihoods is a meager amount of 64.4 crore. Skill development schemes in general have been cut by 86.91% between budget estimate 2020-23 and budget estimate 23-24. The Nai Manjil vocational training scheme had its budget cut by 99.78% from rupees 46 crore in budget estimate 2022-23 to rupees 10 lakh in budget estimate 23-24. क्या है बताइए आप खुद बताइए। आप तो शिक्षित आदमी सर बैठे हैं, आप भी तो नुमाइंदे हैं। अभी मोदी जी ढूंढ रहे पचमंदा कहां मिलेगा
मुसलमानों को लुभाने के लिए, लेकिन खुद नुमाइंदों के आप बजट एस्टिमेट देख लो. The merit cum means scholarship for professional and technical courses at the undergraduate and postgraduate levels has also been slashed by 87.95% from rupees 365 crore in B 2022-23 to 44 crore in 23-24. Despite the over-utilization of the central sector scheme for social justice and empowerment by rupees 85 crore in financial year 22-23, the budget was increased by only rupees 100 crores roughly in the financial year 23-24. The central government also cancelled 2 scholarships. Many of the members have raised this issue. The central government has also cancelled 2 scholarships. The pre-matric scholarship for students from class 1 to 8 belonging to minority communities and the Maulana Azad National Fellowship in November 2022. A decision that was widely contested due to the number of students who relied on the benefits accrued. Muslim students also have the lowest educational attainment levels among all socio-religious categories and comprise the highest proportion of out-of-school children. Hence, the cancellation of this scholarship will only have a detrimental impact on their access to quality education. The Minister of Minority Affairs submitted in a detailed reply to a parliamentary question that funds under the Maulana Azad National Fellowship were being disbursed on a monthly basis. However, research scholars and candidates in universities claim that the funds have not been disbursed for the last 6 months since August, September 2022 or more. So, Madam, I am flagging your attention to this subject because exclusionary attitude cannot be considered as a metric of growth, especially economic growth. So this kind of exclusionary budget should be done away with. That is my submission before you. My district, Murshidabad, is a victim of erosion. Over the decades, district Murshidabad, district Malda, and other districts along the banks of river Ganga have been the victim of severe erosion. People started dreaming a nightmare once the rainy season sets in. Hundreds of villages, thousands of houses, temples, mosques are all destined to be washed away by the assault of the erosion. I don't know how those people could be saved. We know that we don't have any instrument to resist the natural calamity. But I think we have that kind of instrument provided goodwill prevails, at least to mitigate the intensity of the natural calamity. So I would request you that at least the government should be a little generous upon the erosion affected people of many districts in West Bengal, including Bihar also. Lalanji is sitting over here. He was a former irrigation minister of Bihar. He knows very well in this erosion issue. But what I am observing, that this government is always playing very niggard attitude so as to erosion is concerned. And the people has been mixed between the trading of charges which is taking place between state government and central government. So I think both the central government and state government should sit together in order to explore and ways and means so that the erosion affected area could be saved. Because you will be astonished to note that in my districts, in my neighboring districts, the geographical expression of those districts have been drastically altered due to the severe erosion. I think it should be treated as a national calamity, and government should pay its attention to this kind of natural calamity arising out of erosion. Madam, you also are aware of the fact the country has been going agog
because of Hindenburg research paper. I am not accusing anybody, whosoever, don't get it irritated. What I would like to know that हम लोग आम लोगों की नुमाइंदे होते हैं, हमारे पास ये खबर आते हैं कि LIC में 29 करोड़ पॉलिसी होल्डर हैं, SBI में 45 करोड़ खाता धारकों हैं। इन लोगों की कोई तकलीफ तो नहीं होगी ये हिंडनबर्ग रिसर्च पेपर की खुलासा के चलते? ये मुझे आप जानकारी दीजिएगा। LIC और SBI जैसे सरकारी संस्थानों में ये अदानी समूह का बेहद जोखिम भरा लेन देन और निवेश ये सरकार द्वारा किए गए हैं। इस तरीके की उदाहरण, इस तरीके की इल्जाम लग रहे हैं। ये जो अदानी प्रमुख के जो एंटरप्राइज है उसमें 1% से कम से LIC के हिस्सेदारी बढ़कर 4.23% हो गया क्या? ये थोड़ा आप जानकारी दीजिएगा। ये इनकी टोटल गैस में ये हिस्सेदारी 1% से कम से बढ़कर 5.96 पर पहुंच गई क्या? ये ट्रांसमिशन में LIC की शेयरधारिता 2.42% से बढ़कर 3.65 हो गई क्या? ये ग्रीन एनर्जी में ये 1% से भी कम से बढ़कर 1.28% हो गया क्या? पहले ये स्टेट बैंक ऑफ पिछले कुछ दिनों से जब ये शेयर गिरने की खबर आ रहे हैं, तब से LIC के 29 करोड़ पॉलिसी धारकों और निवेशकों के 33,060 करोड़ डूब चुके हैं, ये भी खबर आ रहे हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और अन्य भारतीय बैंकों ने ये समूह के ऋण दिया है। ये समूह पर भारतीय बैंकों का करीब 80,000 करोड़ का कर्ज है, जो समूह के कुल कर्ज के 38% है। उसमें से निजी बैंकों का जोखिम कुल समूह ऋण के 8% है, जबकि सरकारी बैंक के पास समूह के ऋण 30% है। इस पे अगर आप थोड़ा हमें स्पष्टीकरण करें तो बड़ी खुशी होंगे। बहरामपुर लिखा है, कहाँ पे? संशोधन होना चाहिए। अच्छा, ये बहरामपुर लिखा है। ये प्रॉपर नाउन है ना, इसलिए प्रॉपर नाउन। आप हरमपुर लिखते हैं? प्रॉपर नाउन में भट्टोरी को भट्टी होरी भी लिख सकते। प्रॉपर तो हिंदी में होती है। नहीं, बरमपुर, आरामपुर नहीं, बरमपुर है, आरामपुर। ये हराम नहीं है, बरमपुर है। ये हराम नहीं है, बरमपुर। चारों तरफ हराम आवाज। वो नहीं कह रहे, वो आपकी लोकसभा सीट पे लिखे उस सीढ़ी की बात कर रहे हैं। ये समूह के डूबने से देश की संपत्ति दांव पर है, करोड़ों निवेशकों की, करोड़ों पॉलिसी होल्डर की गाड़ी कमाई खतरे में है। इस तरीके की खबर आ रही है। मैडम को मैंने ये भी देखा कि मैडम को सरकार तैनात किए थे इसको मुकाबला करने के लिए। उस समय मैडम ये स्वीकारा कि ये मच टॉक्ड अबाउट ग्लोबली, आई वुड थिंक इज नॉट गोइंग टू बी इंडिकेटिव। आपने ये अपना बयान दिया था, तो इसका मतलब ये होता है कि एट लास्ट आवर फिनांस मिनिस्टर एडमिटेड that it is a subject of discussions and it has already assumed a global dimension. You cannot ignore it. You have also stated that her country's markets were well regulated and she did not expect the controversy around tycoons' business empire to affect investors' confidence. Madam, हो गया sir. Madam, would you please explain, madam, how can investors put confidence when the market capitalization of one of the top 20 richest percent of the world eroded 47.4% for alleged accounting fraud and artificially boosting its share prices? Sir, these are the questions that has been haunting all the common people of our country. They have very clearly said that their exposure, officials that also have been dancing to the tune of the government. SEBI officials, SBI officials, LIC officials. They have clearly said that their exposure is well within the permitted limit and they are sitting over profit even with the valuation failing. मैं ये कहना चाहते हूँ, मैडम, मैं आपसे पूछना चाहती हैं, can madam kindly explain at what valuation Indian banks held their stake in Adani Group? So these are the very सिंपल एंड शॉर्ट क्वेश्चन। एंड ये रेगुलेटरी सिस्टम हमारे देश में कमजोर होते जा रहे हैं,
इसलिए हमारी तरफ से बार बार ये गुहार लगाए जा रहे हैं कि आप जेपीसी की गठन करो, आप सरकार की तरफ से आप सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कुछ ये छानबीन करो। ये कुछ नहीं होता, आपके हाथ में तो ईडी है, उनसे भी कम से कम इस विषय पे छानबीन करना जरूरी है, मैं समझता हूं। क्योंकि आज की तारीख में बार बार हम ये कहते हैं कि हिंदुस्तान की तरक्की के लिए सबसे ज्यादा हमारे इकोनॉमी की ग्रोथ होना चाहिए, और इस तरीके के अगर माहौल पैदा होगा तो हमारे ये इकोनॉमिक माहौल की इसके ऊपर बुरा असर होगी। इसलिए मैं ये कहना चाहते कि मैडम, आपकी जब जवाब आएगी, आप सारे मुद्दे को सामने रखते हुए बड़ी ध्यान से जिस मुद्दे में आम लोगों की परेशानी हो रहे हैं, इसको आप थोड़ा सही ढंग से जवाब दीजिएगा। धन्यवाद।